Very good evening to all of you. Welcome to After Hours with William in India. Today, October 17th. So if you look at today's action, so I think the first hour was not that good, but as the day progressed, the Nifty gained the strength. So in the opening hours, Nifty tested the 17,100 level, as you can see over here. So this was the first candle, and after that, there was a sharp fall in the Nifty after opening around 200 level. But as the day progressed, in the next 1 or 2 hours, it continuously moved higher and tried to move above 300. During the day, it went above that level, but I think in the later half, the range was very small. So 250 के नीचे नहीं जा रहा था, 325 के मेजर बुल उतना ऊपर नहीं जा रहा था. But the good part is that the closing is near the day's high. So this is something positive about the today's session, that the closing is near the day's high. Second good thing about today's session is the reclaiming of 21 DMA. So if you can see the green line over here, this one. Yeah. So this line is the 21 DMA and Nifty has closed above that line. So last time it closed above that line was over here. And after that, for almost 6 sessions, फ्राइडे को ट्राई किया था एक बार, देखिए ग्रीन लाइन के ऊपर गया था, but Nifty was not able to sustain about that level. But today it went over there. One thing to be note over here, even the day was strong, the closing was strong. जो फ्राइडे का हाई था ना, वहां पे ऊपर निफ्टी नहीं जा पाया. So Nifty was not able to move above that Friday's high. So this is something to look for. And one thing which is very negative about today's session, which I personally didn't like, was the volume. So the bar is not over here, but if you draw a blue volume bar over here, so it was already we are in a low volume environment. अभी पिछले कुछ दिन से देखे तो यहाँ पे लो वॉल्यूम है. सो दिस रेड लाइन इज द 50-day एवरेज वॉल्यूम लाइन. तो अगर लास्ट कितने सेशन थे देखो, एवरेज वॉल्यूम आया ही नहीं था. एवरेज वॉल्यूम के ऊपर कब गया था? जब निफ्टी गिर रहा था. ये वाला जो पूरा फॉल था ना, जो 16,750 तक लाया था निफ्टी को, वहां पे वॉल्यूम आया था और उसके बाद पूरा वॉल्यूम ड्रॉप हो गया. ठीक है, बेयरिंग दिस वन डे, जब निफ्टी नीचे जाके ऊपर आया था, ये पूरा ये वाला कैंडल, उस दिन वॉल्यूम आया था. बाकी अभी आप पिछले देखो 8-10 दिन से वॉल्यूम एक्शन उतना है नहीं निफ्टी पे. If you are looking at the call puts, that's a different story. I think we are going in a very different direction as far as the call puts are concerned. The volume over there is there. But if you look at the proper Nifty's volume, it is lacking. And I think today was the lowest volume. अगर आप यहाँ भी 8-10 सेशन का देखोगे ना पिछले की लो वॉल्यूम था, उसमें भी आज का सेशन उससे भी लो था. So that is something what I didn't like. जनरली कोई की मूविंग एवरेजेस रिटेक होता है, डे हाई पे बंद होता है. सो सेकंड थिंग दैट यू वॉच इज द वॉल्यूम, और यू कैन से द प्राइमरी थिंग. प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम, बोथ द थिंग्स आर प्राइमरी. प्राइस, वॉल्यूम, एक्शन. सो प्राइस वाज गुड, नो टू वेज अबाउट दैट, बट वॉल्यूम एक्शन वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग. इनफैक्ट इट वाज अ लो वॉल्यूम रैली. फ्राइडे का हाई भी क्रॉस नहीं हुआ. सो ये दो चीज नेगेटिव पार्ट है. Good part is day high पे close होना और 21 DMA के ऊपर. So I think next 1-2 session will be very crucial to watch out कि क्या ये gain sustain करता है. अभी यहाँ से अगर high volume पे 50 DMA reclaim करता है 500 वाला level, और you see a follow through day, मान लो FTD आता है high volume वाला, ठीक है, then the entire game changes. So then you can consider this as the part of the consolidation कि चलो भाई ये रेंज में 500 से 700 में consolidate किया निफ्टी ने. But if you see the key levels breaching again, कि कल अगर 21 DMA breach हो जाता है in the coming days, if you see this the black line which is very crucial, and that is the 200 DMA 17,000 level पे है, वो अगर breach हो जाता है, then we are heading towards the fresh low, और fresh low के बाद हम फिर से डाउन ट्रेंड में हो गए. सेकेंड थिंग इज, ये जो रैली का हम लोग ट्रैक करते हैं फॉलो थ्रू डे, जनरली फॉलो थ्रू डे 4th to 7th डे ऑफ एन अटेम्प्टेड रैली आ जाता है. तो ये यहाँ पे जो रिवर्सल था ना, ये वाला कैंडल गाइस, दिस वाज द फर्स्ट डे. ये टेक्निकली ये फर्स्ट डे था रैली अटेम्प्ट का.
कि पोटेंशियल बॉटम बना दिया वहां पे. दिस वाज द सेकंड एंड दिस वाज द थर्ड. तो आइडियली हम देखते हैं कि 4 to 7 या 4 to 10 सेशन में आ जाना चाहिए फॉलो थ्रू डे. देन दैट इज अ पावरफुल फॉलो थ्रू डे, बट वो नहीं हुआ. सो व्हाट वी आर होपिंग इज कि फॉलो थ्रू डे जितना जल्दी आता है उतना पॉजिटिव है. फॉलो थ्रू डे इज 1.5% गेन ऑन निफ्टी on a volume higher than previous session. So let's see when it comes. But broadly अगर मैं टेक्निकल लेवल्स का बात करूं तो ऊपर 500 का लेवल है, दैट इज दी 50 DMA. अगर बहुत ही क्लोज जाना है तो फ्राइडे का जो हाई था 350 का, ठीक है, ये दो लेवल्स ऊपर की साइड में देखने रहेगा. सबसे पहला फ्राइडे का हाई 350, देन 500 अराउंड. सो roughly 500 I am saying, which is the 50-day moving average. On the downside, if you see the 250 level, ठीक है, which is the 21 DMA, and below that 17,000 level, which is the 200 DMA. So these are the two higher and the lower levels that you need to watch out for. And yes, when we go higher, we are very, our observation is on the leading stocks कि क्या कर रहा है. एंड दिस वन इज द बैंक निफ्टी. तो यहाँ से स्ट्रेंथ आया है, तो यहाँ पे आज का कैंडल नहीं मिल रहा है, बट यस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 40,000 के क्लोज आ गया है, एंड वो भी डे हाई के पास क्लोजिंग हुआ है. सो यहाँ पे गए देखो थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है. अगर वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखो तो न्यूट्रल है यहाँ पे, कोई ऐसा लो वॉल्यूम रैली वगैरह का इतना यहाँ पे सीन नहीं है. बट अगर यहाँ पे देखते हैं ना, सो दिस वन कैंडल एंड द कैंडल ऑन फ्राइडे, सो बोथ वेर ऑफ हाइज. ऊपर गया था बट क्लोजिंग नीचे के तरफ आ गया था. सो देयर वाज अ कंसर्न ओवर देयर, बट आज का क्लोजिंग इज ऑन अ गुड साइड एंड 50 DMA से कन्विंसिंगली अभी ऊपर आ गया है. अगर बाकी का अभी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 DMA ब्रीच हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ था ऊपर, यहाँ पे भी 2 दिन के लिए ऊपर रहा था, देन ब्रीच्ड अगेन. अभी यहाँ पे if you see the Friday session, it was just at 50 DMA, but today convincingly Bank Nifty has moved above 50 DMA. So अगर Bank Nifty की बात करें, then yes, it has crossed the important level, but यहाँ पे ट्रैक करना important रहेगा. फर्स्टली जो 500 का लेवल है, ठीक है, 500 550 का लेवल, 39 I am talking about 39 500 550, and also the 50 DMA. So two things to track over here as far as the Bank Nifty is concerned. Okay, so if you look at today's top gainers and losers, obviously the banks were there. SBI, HDFC का रिजल्ट अच्छा आते ही बाकी सारी बैंक्स के वो बिल्ट अप होने लगता है वो expectations. That HDFC, ICICI, Axis, they might also do well. The others top gainer were the Bajaj Finance as well as the NTPC. On the flip side, the metal stocks were beaten, Hindalco, JSW Steel. But if you can see, the loss of the HCL Tech in Britannia was very less than 1%, and there was some profit booking in L&T as well. So these were the Nifty 50 top gainers and losers. अगर आप ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देखो तो अभी इतना पॉजिटिव नहीं है. जनरली एक बार अगर इंडेक्स गेन स्ट्रेंथ कर लेता है, द बेंचमार्क इंडेक्स दैट इज निफ्टी, आई थिंक उसके बाद ब्रॉडर मार्केट माइट फॉलो. सो इधर फॉलो थ्रू डे और 50 DMA रिटेक, आई थिंक उसके बाद ब्रॉडर मार्केट ज्यादा फॉलो करेगा. अभी के लिए ब्रॉडर मार्केट इज वेरी न्यूट्रल टू वीक. सो दैट्स व्हाट द एक्शन इज देन indicating. If you look at the sectors, yes, the banks was the clear leader. The financial service, अगर FMCG flat, IT almost 0.2% gain flat था. Metals were the top losers, 1% loss, and also the realty stocks. So the PSU banks as well as the private banks. So gain ज़्यादा PSU bank में आया, and that is due to the leader SBI. कैन बैंक भी अच्छा परफॉर्म किया, बाकी एसबीआई मेजर वेटेज है तो वहां से एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था. If you look at the last part, some key news, IRB came out with the results. So revenue growth was very good. EBITDA declined 24% on a YOY basis, and the margin was at around 44.9%. And PAT इतना खराब नहीं था, सिर्फ 2.4% YOY basis पे डिक्लाइन हुआ.
Then couple of cement companies came out with result. If you look at ACC, the PAT missed consensus estimate. The revenue grew just 6.3%. EBITDA was around 16.4 crore versus 713 crore. So net, it reported a loss. I think there is some one-time thing we need to check. And volume increased 4.3% YOY to 6.85. If you look at Heidelberg Cement, the revenue declined 12.2% on a YOY basis, and EBITDA also declined almost 60% on a YOY basis. Orient Hotel came up with the result. 70% YOY growth in revenue, that's a decent one. EBITDA also grew 406%. So yeah, hotel stocks cover outperformance continue. Even the other hotel stocks are holding well. Last quarter भी उनका result थोड़ा improve हो गया है. The commentaries अच्छी थी. And so this quarter the results are coming well. If you look at the margin, almost 17% expansion to more than 26% of margin. लास्ट क्वार्टर में लॉस था, इस बार 11 करोड़ का प्रॉफिट है. So that's it for today's session, guys. See you tomorrow at 8:45 a.m. in the morning. We will be discussing how the volatility played out in the US market, guys. So markets are very volatile, so you need to be very watchful. जब तक कोई confirm trend नहीं मिल जाता ना, try to take a pause from the market and enjoy the festival season. If there is something very important, some trend change, follow through day आता है, TDMA के ऊपर strong volume से निकलता है, stocks are doing well, we will tell you that yes, it's the time now. But till then, it's all according to owning methodology. It's advisable to take a pause over here because neither we are in downtrend, neither in uptrend. We are consolidating in a range, and the market can go any side. So let's see how the global market behaves. We will discuss few things about the global markets tomorrow morning, as well as how the Nifty is placed to open and what to look for tomorrow. Thank you for joining today's session.